Exercise 4.4 will be discussed in this part. The concept related to this exercise is already discussed in previous video. You can check the link in description box. So let's start. The very first question is, give the geometric representations of y equal to 3 as an equation in one variable and in two variable. We have studied this concept कि हम linear equation one variable को two variables में भी represent कर सकते हैं. तो इस question में हमें geometrically वन वेरिएबल की फॉर्म में और टू वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द लाइन इज शोन वेयर y इक्वल्स टू 3 नंबर लाइन पे शो रहा है. सो इट इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो नंबर लाइन इज हियर, y equals to 3 will be represented here. So first part is done. Then for second part, we know that y equal to 3 can be written as 0 into x plus y equals to 3. हम ये चीजें स्टडी भी कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स में that y equals to 3, y equals to कोई भी कांस्टेंट की जो इक्वेशन होगी वो जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे that will be parallel to x axis. तो ये तो हमें पता ही है, बट हम इसे पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे. y equals to 3 को हम लिख सकते हैं 0 into x plus y equals to 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व इट. जब हम गिवन इक्वेशन में x इक्वल 1 पुट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 0 into 1 plus y equals to 3. 0 plus y equals to 3. It means y equals to 3. So first solution हमें मिल गया 1 3. Now we'll put for the second solution x equals to 2. So 0 into 2 plus y equals to 3. 0 into 2 0 plus y equals to 3. इम्प्लाई y हमारा फिर से क्या आ गया 3. कांस्टेंट रहेगा y थ्रू आउट इस गिवन इक्वेशन में. सो हम प्लॉट करेंगे वन बाय वन. 1 3 विल बी प्लॉटेड हियर. 1 इज हियर, 3 इज हियर एट दिस पॉइंट. 1 3, देन सेकंड वन 2 3 विल बी प्लॉटेड हियर. 2 3 we'll join these two line. So this line is of equation y equals to 3. Now we have question number 2. Give the geometric representation of 2x plus 9 equals to 0 as an equation in one variable and in two variable. Previous question की तरह ही है, but हमें यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी. x की वैल्यू के लिए 2x plus 9 equals to 0. 2x equals to minus 9. x equals to minus 9 upon 2. जब हम इसे सॉल्व करेंगे we'll get x equals to minus 4.5 here, like this. So we can say the representation of the solution on number line is shown. ये represent कर रहा है हम ये solution को number line पे, where x equals to 4.5 will be treated as equation in one variable. So 4.5 यहाँ पे लाया करेगा minus 4 and minus 5 के बीच में. This is minus 4.5. x equals to minus 4.5. Now, second part of this, we know that x equal minus 4 upon 5 can be written as, जब two variables में represent करेंगे तो हम इसे x plus y का कोफिशिएंट 0 equals to minus 4.5. जब हमारी ये फॉर्म दिख गई है हमें कि x equal minus 4.5, it means इसका जो ग्राफ होगा line will be parallel to y axis. हम इसको सॉल्व करते हैं. Put y equals to 1 in the equation. What we will get? X plus 0 into 1 equals to minus 4.5. x plus 0 equals to minus 4.5. x equals to minus 4.5. So first solution is minus 4.5 1. Now for second solution, put y equals to 2 suppose. So when we'll solve it, x plus 0 into 2 equals to minus 4.5. x plus 0 equals to minus 4.5. So we'll get a value for x that is minus 4.5 here. Now we'll plot these points or solutions in the graph. Minus 4.1. Minus 4.5 will lie between minus 4 and minus 5 here, and 1 is here. So the first solution will be plotted here. Minus 4.5 and 1. Now second is minus 4.5 2. Here it will be plotted minus 4.5 2. We will join these two lines
like this it will be joined. This line is of equation x equals to minus 4.5. So in this way we have plotted the graph of equation x equals to minus 4.5. So I hope this concept must be clear to you and these questions are done. The chapter is completed. If you still have any doubt in any of the part, you can ask your queries in comment section below.